Do you know what is Nebular Hypothesis? The hypothesis considered that the planets were formed out of a cloud of material associated with a youthful sun, which was slowly rotating. Later in 19th century, Chamberlain and Moulton considered that a wandering star approached the sun. As a result, a cigar-shaped extension of material was separated from the solar surface. As the passing star moved away, the material separated from the solar surface continued to remove around the sun and it slowly considered into the planet. Sir James Jeans and later his Harold Jeffrey supported this argument. At a later date, the arguments considered of a companion to the sun to have been coexisting. These arguments are called binary theory. This is 1950 Otto, Schmidt in Russia and Karl Wisasker in Germany somewhat revised the Nebular hypothesis, though differing in detail. They considered that the sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen and helium along with what may be termed as dust. The friction and collision of particles lead to formation of a disc-shaped cloud and the planets were formed through the process of accretion. So mainly जो है ये हाइपोथेसिस में जो 4 या 5 स्टेजेस बोला जाता है, जिसमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि सोलर निबुला जो है वो एक गैशियस फॉर्म में होता है, रोटेटिंग क्लाउड्स की जो भी फॉर्मेशन होती है उसके बाद जो है ये कन्वर्ट होता है और ये सोलर स्टार्टिंग में सुपरनोवा होता है, फिर सोलर निबुला में कन्वर्ट होता है, फिर ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल की वजह से कोलैप्स होता है और रोटेशन करता है. उसके बाद आता है एक्सेलरेशन डिस्क. उसके बाद ये जो है एक्सेलरेट करता है, स्मॉल प्लैनेट एनिमल्स बनते हैं, कोलाइड करते हैं और लार्ज प्लैनेट कोलाइड करने के बाद रिमेनिंग जो भी डस्ट होती है वो उसके चारों तरफ मतलब फैली होती है और रिमेनिंग डस्ट एंड गैसेस आर इवेंचुअली रिमूव्ड लीविंग प्लैनेट्स अराउंड द सन. अ न्यू सोलर सिस्टम इज फॉर्म्ड थ्रू दैट. यू कैन सी इन दैट पिक्चर, क्योंकि स्टार्टिंग में जो होता है गैशियस फॉर्म में जो है शैटर्ड होता है, उसके बाद जो है ये एक स्ट्रक्चर लेता है और ये फिर रोटेट करने के बाद पूरा सोलर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होती है. दिस वाज ऑल अबाउट. Thanks for watching the video. If you really like the video, please share and subscribe the channel and share with your friends. Thank you so much.